Hello students, how are you all? I hope you are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 7 of your class 7 English grammar, that is senses. So let's begin with this lesson. Tenses are used to denote the time of an action. This we use of the time of the action to denote तरीके use होते हैं. Signs of tenses, there are three kinds of tenses like present tense होता है, past tense होता है, future tense होता है. Present tense क्या होता है? जो आप हो रहा है. Past क्या होगा? जो हो चुका है. Future क्या होता है? जो होने वाला है. So present tense is used to denote an action that happens now. रोutine और पूरी है. Present tense क्या होगा? Four sides के होते हैं like indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. First, there is simple present tense. This is indefinite tense. A simple present tense is used to negate an action is a present tense. negate अगर वही action तो present में हो रहा है. Like F of first one is affirmative sentence. सब कैसे form होता है? सब्जेक्ट होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है एस या ई एस, अगर रिक्वायर्ड है प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट डू नॉट या डस नॉट आता है. नॉट से ये हमारे क्या बन जाता है? नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है. इंटरप्रेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है? इंटरव्यूअर पर्सन मतलब खड़ा है, गाइड ऑफ बूडर्स आता है, सब्जेक्ट आता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन मार्क. Uses of present indefinite tense कैसे यूज होता है? Which is used to express a general truth. एक general truth के लिए यूज होता है वो. The sun rises in the east. To show a habitual action एक habitual जो आदत करते पुराने क्यों होते हैं like my father reason is over day. Date best fixed arrangement present or future. Our school starts at 8 o'clock. कब start होता है? 8 बजे वही स्कूल start होगा. Copro was as saying, तो आपको वो प्रेज अप के लिए होता है. A bad verb quarrels with his stool. There's a continuous tense. The present continuous tense is used in order continuation in the present. चीज चल रही है वो तेज रोटेट की पर present tense. Affirmative से कैसे फॉर्म होता है इससे? सब्जेक्ट होता है प्लस इज एंड नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि वो चीज हो रही है. आईएनजी फॉर्म आती बीइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट. नेगेटिव पे नॉट आ जाता है, सेम है सब्जेक्ट का जैसे प्लस नॉट आ जाता है वर्ब से पहले प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव पे क्वेश्चन होता है इज एन आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे यूज होते हैं? वहाँ पे यूज होता है इट इज यूज्ड for ensuring happening now, which is actually बोल रही है like precise writing a letter. ing आ गया ना यहाँ पे. और concentrate future action और event कोई रखनी तो जी होने वाली है पक्का. They are going out for prom tomorrow. For an action which happen again and again, action बाबा होता है. It is always raining in London. Always raining ing आ गया. For future plan, with is planning to buy a gift for our mother. Our present perfect tense. It tells us about an action that began in past tense. किसके बारे में बता रही? जो action में past tense में वो start हो चुका है and is still connected with the present. जो कब भी connected से present से in some way or the other way. Now affirmative sentence क्या हो गया? Subject होता है plus has had plus side form of the verb होके plus object होता है. Negative sentence the subject plus has had plus not plus side form of the verb plus object. Interleading में क्वेश्चन मार्क होता है. क्वेश्चन को जब होता है हैज अ प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू शो completed activities in the immediate past. The completed activity that lie immediate past में like for example he had just finished his work. he just अभी अपना work finish कर रहा है. To convey information or he used the prime minister has sent to the prime minister has signed a nuclear deal with America. Signed मतलब जो जी हो चुकी है. So present perfect tense है. We show an action that started past and is continuing up to the present. क्या show वही जो start past को उसका continue हो रहा है present में. वैसे moment में I got this and my view मैं बात करता रहा हूँ अभी करता हूँ. Present perfect continuous tense. So it tells us about the action that started in the past and is continuing up to a present time. जो start हो चुका है आपके पास में अभी continue हो रहा है present time में. Affirmative sentence होता है इसके वैसे में होता है subject plus has that plus be plus verb plus ing plus object plus things of for plus kind. Negative कैसे form होता है? Subject plus has that plus not plus be plus verb plus ing plus
object plus since or for plus than. Our intermediate sentence has have plus of subject plus be plus verb plus ing plus object plus since for plus time question mark. So it use of perfect continuous tense and perfect continuous tense कैसे यूज है? It is used to denote an action that begins past tense still continue जो कि still past again हो चुका है और कि continue हो रहे हैं. For example, it has been raining since morning. और serious तो वहाँ से दरी हो रही है. Present perfect continuous tense. Now, let's talk about past tense. So चीज हो चुकी है. जो जीरा past में काट चुके हैं, that is past tense. There are code types: indefinite continuous, perfect and perfect continuous. Past indefinite tense समझ होता है. It does about an action completed in the past. जो action complete करके पास से उनके माने हुए बताते हैं. Affirmative sentences form with the subject. Your second form of verb plus object. Negative sentences form the subject plus did not plus first form of the verb plus object. Interrogative sentences form with the did plus subject plus form of the verb plus object. Now uses of past tense कैसी कुछ करके हमें को. It is used when event took place in the past. If कम use होता है event का हो चुका है past हो चुका है. For example, he wanted to go to museum yesterday. वो yesterday museum जाना चाहता था. To indicate past habit. Past habits को indicate करने के लिए. For example, Raman used to get up early when he was a child. रमन को सुबह जल्दी उठता जब वो try to narrate the story को story narrate करने के लिए वो past use करते हैं. So once upon a time there lived a gave up on the king accurate. So the dumb body see like you standing in the streets that like running as we was one of the leading warriors. Past continuous says कैसे मुझे होता है. जो चीज past में जो हुई थी और हो रही है. It shows an action that was taking place in the projection past से को रखा. Like subject plus was verb plus ing plus object होकर. Negative ring normal job. The subject plus was verb plus and verb or not plus it plus object. Verb plus ing plus object in the video में was verb plus subject plus verb plus ing plus subject. Object and question mark. Uses of past continuous tense. क्या use होता है? It is used to denote an action going on in the past. The action going हुआ और the past चल रहा था. Past perfect tense. It is used to denote an action completed at some point in the past before another action commences. ये can indicate करने के लिए use होता है जो action क्या होते हैं पार क्या हो गए गंभीर उसके some point to fast में जो और another action complete उसके बाद भी करत अच्छी comments होगा like इनके affirmative sentence कैसे form हुई था subject होता है plus had plus third form of the verb plus object. Negative पे not other the subject plus had plus not the third form of the verb plus object. Interrogative and had plus subject plus third form of the verb plus object. Now uses of past egoic tense. It is used when a text is completed before a certain movement is a past. कम यूज होता है. इट इज यूज है जो हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है एक सर्टेन मूवी में फास्ट में. फॉर एग्जांपल दे हैड ऑलरेडी पेड द बिल ऑलरेडी पे कर दिया हमने. आउट ऑफ टू एक्शन हैपन इन द पास्ट इट शोज व्हिच एक्शन टुक प्लेस. पर जब टू एक्शन काफी हो चुका है कि ये शो कर देगी जो एक्शन टुक प्लेस इन द कौन सा एक्शन कर रही हुआ है. It be correct the others after the program begin because yes, with the program begin हो गया. So as fast perfect continuous tense, it tells us about an action that began before a certain point in passing continue up to the hand. So certain point तो pass it begin हो चुका है continue हुआ एक kind तक. इसका affirmative sentence, false sentence कैसे form होता है? Subject plus had been plus verb plus ing plus object plus since for plus kind. So assertive sentence जो negative होता है कैसे form होता है? Subject plus had plus not plus be plus verb plus ing plus object plus sit for plus kind. Interrogative had. Interrogative में question आता है had plus subject plus verb plus ing plus object plus sit for or time and question how. Now uses of past perfect continuous tense कैसे use होते हैं past perfect continuous tense? Would they use for an action that we did before a certain period in the past? And continued up to that जो किसमें यूज होगा जो examples we had been enjoying your holidays for 5 days. 5 days हम अपने हॉलीडे की enjoy कर गए इतने. Future time denotes an action that is yet to happen.
फ्यूचर टाइम के जो एक्शन होने वाला है, लाइक फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर टेंस जो एक चीज होने वाली, जो आप पढ़ने वाले हो, होता है आपकी फ्यूचर टेंस। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस आल्सो: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. First says the word future indefinite tense. It is used for an action that would take place in the future. उसके लिए with the direction आपकी future में होने वाले हैं। Like affirmative sentence कैसे form होता है? Subject plus will, the or share plus first form of the verb plus object. Negative sentence कैसे form होता है? Subject plus will plus shall plus not plus first form of the verb plus object. Intermediate कैसे form होता है? Will shall plus subject plus first form of the verb plus object. Now using of future indefinite tense ऐसे use होते हैं। It is used to refer the future in general. जो future है होने वाला उसके लिए use होता है। I can play cricket in the अब मैं खेलूँगा cricket part thing. To predict about the future, I think it will wait tonight. Predict करने के लिए भी use होता है। To refer the future plans, circle the particular future plans को do it you this weekend. Future continuous sense. It tells something about action that will be progress at a future time. So ये बताता है उन actions जो है जो continuous होता है. It tells something about action that will be progress जो progress होंगे at a future time. Future time में affirmative sentence subject plus this है plus be plus verb plus ing plus object. Negative sentence क्या होता है? Subject plus will plus not plus be plus verb plus ing plus object. The interrogative sentence here then will shall plus subject plus be plus verb plus ing plus object. Now uses of future continuous tense. क्या कैसे uses होते हैं इनके? It is used to indicate definite action at a specific time in the future. Indicate करने के एक definite action to a specific kind of future में होने वाला है. Like for example, today will you pass TC pigeon for the contest tomorrow till 3 p.m. So before polite inquires, well, like really you coming? Will you be coming home sometime during the next month? उस सेंटर कहते next month हमारी घर पे आओगे? Polite refer inquiry or harassment. Future perfect tense denotes the completion of an action within a definite period of time in the future. इत्यादि होता है complete action complete completion of action जो एक future में होने वाला है definite time period में. Affirmative sentence subject plus will shall plus have plus third form plus verb plus object. Negative sentence होता है subject plus will shall plus not plus have plus third form of verb plus object. In the relative sentence, the will shall plus subject plus have plus side form and the verb, the object and question mark. Now use of future perfect tense is NK. It is used to denote the completion of an action within a definite period of time in the future. किसने denote होता है? एक it's completed or completion of actions over a definite period of time में future है. Now for example, Anis will have completed his score by Tuesday. Talk about the deadline. The school will have published the annual results by tomorrow afternoon. ठीक है? It is used for future perfect tense. So कैसे यूज होता है? और टॉप और एक डेडलाइन के बारे में अगर आफ्टरनून तक रिजल्ट कंप्लीशन हो जाए पब्लिश हो जाना चाहिए. Now future perfect continuous tense. It denotes actions that continue for some before they are completed in the future. कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू है जो कंप्लीट होने वाले फ्यूचर लाइक affirmative sentence is formed with subject plus will shall plus have be plus verb plus ing object plus series for thus time. Now use कैसे होता है ये? So it is used to denote action that definitely takes place before a certain time. जो a action denote होता है definitely take place करेगा इस सारी period of time में future में and will continue for some more time. वह continue हुई वो whole time के लिए. For example, I will have been preparing for my competition for the next week. What prepare our competition day next week. So particularly emphasize on the scores of future action. Like I am sure that you will have playing when I visit your home tomorrow. मैं पक्का श्योर जो मैं ट्राई करके रहूँगा को खेल रही होगे. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.